In this video, I am going to discuss about the chapter Atoms, Origin of Spectra, means Bohr's theory of the hydrogen atom. And already have studied this chapter in the class 11th in the chemistry, and I hope maybe all of you know about this chapter here. So, but before I start this chapter, I want to give a little introduction about it, and I hope maybe all of you know. With the discovery of the electron by the J.J. Thomson in 1897, it was supposed that the electron or the atom as a whole is neutral and atom consists of a negatively charged particle that is called the electron. So Thomson was given the plum and pudding model regarding this atomic structure. But this atomic model could not explain the certain facts. So meanwhile, Rutherford and his co-workers did a alpha particle scattering experiment, and on the basis of this alpha particle scattering experiment, Rutherford gives a new structure of atom here, and till today here that model is accepted. So alpha particle scattering experiment, or in the alpha particle scattering experiment, what Rutherford did and Rutherford and his co-workers did here means when a high energetic alpha particle is bombarded on the gold foil, then it observed that some alpha particle goes without any deviation, some alpha particle goes or deflected at the small angle, some alpha particle deflected at 90 degree or more than 90 degree, some alpha particle is what here written along the same path. So on the basis of this experiment, this Rutherford was given or explained successfully the atomic structure, means the presence of the nucleus in any atom here. So according to the Rutherford, some alpha particle goes without any deviation, and it means the atom is mostly hollow inside. क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के निकल गए थे, तो इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने ये बताया कि इसका मतलब ये क्या है, ये एटम मोस्टली द एटम इज हॉलो इनसाइड. सेकेंड, द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल. कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल. कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए. अब देखिए अल्फा पार्टिकल के पास भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब इस एटम के अंदर कोई एक ऐसा रीजन होगा जहां पे पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा, और यही पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर होगा वही पॉजिटिव चार्ज के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट रदरफोर्ड टोल्ड दैट कि द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स मस्ट बी concentrated in a very small space. Again, some alpha particle was deflected at an angle greater than 90 degree, and on the basis of this, Rutherford told that the positive charge in the atom is concentrated in a extremely small space at the center of the atom, and that space is called the nucleus. So finally, on the basis of this experiment, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये रदरफोर्ड ने बताया कि इस एटम के अंदर इसके सेंटर पे कोई एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये सब अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट होते फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. So this experiment gives the important information regarding the existence of the positive charge in the atom. और इसी एटम के अंदर सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज लिया गया था, इसी को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस. And in this way you can say Rutherford is also given his model regarding the new atomic structure of the atom. But this atomic structure of the atom or the Rutherford model is also include some shortcomings. इसमें भी कुछ drawbacks थी, and I hope maybe all of you know what is the drawbacks in the Rutherford model, because the Rutherford model was not able to explain the existence of the nucleus, means regarding the stability of the nucleus, as well as Rutherford model was not successfully explained the
regarding the line spectrum. So first, before this one, I am going to discuss about the distance of the closest approach of the alpha particle to the nucleus. Now, the distance of the closest approach of the alpha particle to the nucleus. It means we can estimate the size of the nucleus by the scattering of the alpha particle. Suppose this alpha particle, and all of you know the charge on the alpha particle is 2 times the charge on the proton, so plus 2e. And when this alpha particle is bombarded, suppose it comes closer to the nucleus, up to this distance r0 here. And you know the charge on this nucleus is what here? Plus Ze, where Z is what here? Atomic number. And you know when this fast moving alpha particle or when this high energetic alpha particle is bombarded toward the nucleus, तो ये तब तक पास आता जाएगा जब तक कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ना बदल जाए. And you know when two charged particles Q1 and Q2 separated by a distance r, then electrostatic potential energy between them is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r. इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के उतने पास तक जाएगा, जब तक कि इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में न बदल जाए. जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा इसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, वहीं से क्या कर दिया गया, फिर वापस जाएगा. लेट r0 be the distance of the closest approach of alpha particle to the nucleus. मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के r0 डिस्टेंस से क्लोज आता है. तो at this point you can say let r0 be the distance of the closest approach of the alpha particle to the nucleus. Then at this instant electrostatic potential energy, इस अल्फा पार्टिकल को जब ये यहां तक पहुंच जाएगा तो डिस्चार्ज प्लस Ze यहां हो गया और प्लस 2e यहां हो गया, उनके बीच की डिस्टेंस r0. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज हाउ मच? 1/4 pi epsilon naught Ze Q1 2e Q2 upon r0 distance between them. And in this way you can say 1/4 pi epsilon naught 2 Ze square upon r0. So if the initial kinetic energy of the alpha particle is k, then at the distance of the closest approach u is equal to k. हमने क्या बताया था? If suppose this alpha particle is bombarded toward the atoms with the kinetic energy k, then when it comes closest to the nucleus, then whole kinetic energy k is changed into its electrostatic potential energy. So at the distance of this closest approach, whole electrostatic potential energy or whole kinetic energy is changed into electrostatic potential energy. So in this way you can say at place of u you can write k is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 Ze square upon r0. At the distance of closest approach, पूरा का पूरा उसका काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. And from here you can say r0 is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 Ze square upon k. And in this way you can find out the distance of the closest approach. Means you can find the size of the nucleus. So as you know, the Rutherford model of the atom means on the basis of the observation of the alpha particle scattering, Rutherford presented a model of the atom called the Rutherford atomic model. And in this model of the atom, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि सभी एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन ऑर्बिट्स. ये इन्होंने बताया रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. But there is some drawbacks in the Rutherford atomic model. And first drawback is what here? Regarding the stability of the atom. जिसमें रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल लगातार मूव करेगी तो इट विल रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इट मींस द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कंटीन्यूअसली emit the radiation or continuously emit the energy.
And so it's what here, its radii will be becomes smaller, and a time will comes when that electron will fall in the nucleus, and in this way you can say there is no any existence of the nucleus. So regarding the stability of the atom, जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो इसका मतलब उस समय कोई एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बता पाया था। एंड सेकेंड ड्रॉबैक रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाएगा और कॉन्टिन्यूसली ये रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगातार लग रहा होगा न्यूक्लियस की तरफ। सो कॉन्टिन्यूसली इट्स रेडियाई बिकम्स स्मॉलर, लगातार इसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, एंड व्हेन इट्स रेडियाई बिकम्स स्मॉलर सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी आल्सो चेंज। इट मींस इट रेडिएट्स द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह से इसको एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का नेचर शो करना चाहिए था, लेकिन इसने जो स्पेक्ट्रम दिया वो एक लाइन स्पेक्ट्रम दिया। सो रदरफोर्ड वाज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ दैट लाइन स्पेक्ट्रम। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। एंड नील्स बोहर इन 1930, नील्स बोहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1930 में ये दोनों प्रॉब्लम के मिस ही रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, and the model which was given by the Niels Bohr, that one is called the Bohr's atomic model. So to remove the difficulties of the Rutherford model of the atom, Bohr proposed his model for atoms here, or Bohr's atomic model, or Bohr gives the some postulates to remove the difficulties of the Rutherford model. तो बोर्स ने 3 postulate दिया था regarding the atomic model here. First one, according to the Bohr's first postulates, electrons can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi, जहां h क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। तो बोर्स ने बताया अपने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के। मान लेते हैं इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, मूविंग विद वेलोसिटी v इन एनी ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट की रेडियस है r, तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v r। दिस वन इज एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन which is equal to integral multiple of h upon 2 pi means nh upon 2 pi, where n is equal to, since n is an integer, so n is equal to what here, 1 2 3 and this n is called the principal quantum number of the orbit. Is principal quantum number of the So according to the first postulates, electrons can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. And what you have taken, if the mass of the electron is m, velocity v, and moving in a orbit of radius r, then its angular momentum mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1 2 3 is what here, principal quantum number of that orbit. And this equation is called Bohr's quantization condition. So this equation mvr is equal to nh upon 2 pi is called Bohr's quantization condition. So on the basis of this postulates, you can say electrons can revolve only in a certain orbit of certain radii, a definite radii, not in all radii here. And such type of the orbit जिसमें उसका angular momentum nh upon 2 pi होगा, ऐसे ऑर्बिट को नाम दिया गया है स्टेबल ऑर्बिट। व्हाट ऑर्बिट? स्टेबल ऑर्बिट। एंड व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट?
in the second Bohr's postulate is what here? While revolving in the stable orbit, the electron does not radiates the energy. इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऐसे समय में किसी भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है. So in this way you can say when electrons revolve in a stable orbit, then it does not radiates the energy. So finally you can say here, even the acceleration means centripetal acceleration is acting toward the सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन लगेगा, लेकिन ऐसे स्टेबल ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, एंड हेंस द एटम इज रिमेन स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन द स्टेशनरी स्टेट. इसलिए जो रदरफोर्ड की पहली ड्रॉबैक थी वो यहां से दूर हो गई. तो वंस अगेन लिसन व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट. While revolving in the stable orbit, the electron does not radiate the energy while the centripetal acceleration is acting toward the center. And in this way, the atom is remain stable and it exists. And the most third postulate is what here? कि when the atom receive the energy from the outside, जब एटम बाहर से एनर्जी पाता है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे विल लीव देयर ऑर्बिट एंड गोज इनटू हायर ऑर्बिट. तो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और इस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज रीच इन द एक्साइटेड स्टेट. बट आफ्टर 10 to the power minus 8 second दैट इलेक्ट्रॉन comes back to the lower orbit. And when it will come back to the lower orbit, then it radiates the energy, and that energy will comes in the form of the electromagnetic waves or electromagnetic radiation. Suppose the energy of electron in any orbit is E1, and after receiving the energy from outside, it jumps from this energy state to any higher energy state in which the energy of the electron is E2. Then according to Bohr's third postulate, कि after 10 to the power minus 8 second, when it will return from higher energy orbit to lower energy orbit or higher energy state to lower energy state, then it will radiate the energy in the form of electromagnetic waves. And you can write here E2 minus E1 is equal to h nu, and the frequency of that radiation which is emitted, that one is given by nu is equal to E2 minus E1 by h. And in this way we can find out the frequency of that radiation. So this equation is called Bohr's frequency condition. So in this way, by these postulates, three postulates, Niels Bohr ने क्या किया कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया. So please all of you learn these three postulates, and I hope maybe already have studied in the class 10th all these postulates. Drawbacks of the Rutherford model. Nothing is new for you. So today you go through this one here, and in next video I will give you the Bohr's theory of the hydrogen and hydrogen-like atom. Thank you.